press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा और मैं आज आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कृष्णा व्यूज। दोस्तों, मैंने एफटीडी फैक्ट पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऑलरेडी देख लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और या तो आई बटन में आपको ऊपर मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल के वीडियोस पे जाके या फिर प्ले लिस्ट पे जाके देख सकते हैं। ये देखने के बाद मुझे कमेंट में काफी लोगों ने कमेंट किया और मैसेज करके मुझे बताया कि आपको एफटीडी फैक्ट ऑन कराची देखना चाहिए जरूर। तो मुझे लगा कि चलिए देख लेते हैं यार, इतने सारे लोग ने रिक्वेस्ट की है। हालांकि कराची के बारे में तो जानते हैं कि कराची एक फाइनेंशियल सेंटर है ना, इंडस्ट्रीज वगैरह वहां पे ज्यादा है और मोनूमेंट्स जो होते हैं पुराने टाइप्स के, है ना, जो बहुत टाइम पहले के बने हुए हैं, वो सारी चीजें हैं वहां पे पुराने जमाने के। और ये काफी वो सिटी है जैसे कि इंडिया में मुंबई है ना, जो इंडिया की इकोनॉमिक को बूस्ट करता है। सेम कराची है जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक को बूस्ट करता है। तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन, और फिर इसके बाद मैं इस वीडियो से क्या अंडरस्टैंड किया मैं और मैं कितना समझ पाया हूं कराची को, वो इस वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो हियर वी गो, 1, 2, 3 एंड स्टार्ट। समंदर के साइड में बसा हुआ है। Karachi is a city located in Pakistan, and it is one big city that is either loved by many or hated by thousands, especially drivers during rush hour. It is a city that, for us here on FTD Facts, we are visiting for the first time because we don't know a lot about it. So what's up, guys? My name's Dave Walpole, and welcome to FTD Facts, the channel where we teach you guys about everything around the world. Now, last week we talked about Dubai, and people went crazy for it. And because of that, we've decided here on FTD Facts that maybe we shouldn't just look at cultures, countries, and peoples, but we should also look at the stories of the individual cities within those countries. And because of that, I thought maybe we should do a video on Karachi because it is a big city. And for me, not gonna lie, I didn't know a lot about it, so I had to do an extensive amount of research and learn more about this fantastic city. Now, also before we get in this video, I gotta ask you, what are your 3 favorite cities around the world? Mine would either be like New York, maybe, I don't really know, maybe Boston? Gosh, I have to really think about this one, but I want to know your favorites down there. Also, with that being said, for those who are new to the channel, just to let you guys know, we like to take a lot of recommendations for future fact videos. So if you guys got a recommendation for a city or a country for us to do, or an institution, let us know down there in the comments below. So let's start off with the obvious. Karachi is a huge city. It's a big city. And it is a city with the biggest population in all of Pakistan. Karachi, as of 2016, has approximately 24 million people living in the city, making it the second most populous city next to Shanghai. Now, to be honest, this 24 million is pretty much speculation because they haven't done a census since 1997. However, there is plans to have a new census taken this year in 2017, and although it is the quote-unquote second largest city in the world, do not confuse this with the largest agglomeration cities, which is a collection of cities to be under one city. And if we were talking about agglomerations, it would sit at 5th in the world. Now, the size of Karachi is big. It's got a big landmass. Currently, Karachi sits at 3,537 kilometers square, making it about 4.5 times bigger than New York City, which is good because New York City is one crowded city for a small area. But when we think of countries, institutions, and even cities, we wonder where do they get their names from? It is thought that Karachi was founded in 1729, and at that time it was named Kalachi, which is named after a female fisherman named Mai Kalachi, who is one of the people that helped build the community around the area. Now, in 2014, it was estimated that Karachi collects alone over 1/3 of the entire tax of Pakistan. And that is for one city alone. Isn't that insane? This makes Karachi being worth an estimated $113 billion as of 2014. And since then, it's probably gone up because real estate has gone up. Now, within this city, it is made up of 6 different districts. Now, originally, there were only 5 districts being called Karachi
Karachi Southeast, West, Central, and Malaya. But in Malari 2013, they split up the Korangi. East District and added in Korangi. In 1947, during the partition of Pakistan and India, Karachi already had 400,000 people already living in it, and it was the largest city in the Sindh province. And at that time, it was named the capital of Pakistan until it was moved to Rawalpindi in 1958, which then in turn, in August of 1967, moved to Islamabad. Now, Karachi's also got 3 airports, one of which is international. And that is the Jinnah International Airport, which is the busiest airport in all of Pakistan, having over 6.2 million flyers a year. Now, one downside, which a lot of people have talked about, is the crime of Karachi. Now, obviously, with it being a bigger city, the homicide rate is obviously larger. However, a study in 2015 discovered that there were only 12.5 homicides per 100,000 people, making it far lower than places like Acapulco, Venezuela, or even some American cities like St. Louis or New Orleans. And since then, Karachi has introduced higher security measures, which is starting to make the place a lot more safe. Karachi is also home to many protected sites that are on or considered on the list for the UNESCO heritage sites. And 6 of them on this list are considered national monuments, such as the beautiful Mazar-e Quad, which is the tomb and final resting place of Pakistan's founder, Muhammad Ali Jinnah. And let's not forget the Chikandi tomb, which is the burial ground for the Jokio tribe, which was built somewhere between the 15th and 18th century. But what makes Karachi interesting is it has 350 protected sites all around the city. Now, speaking of heritage sites, you will notice that in certain areas there are colonial era buildings, such as the Governor's House, the Lady Dufferin Hospital, and the reason for this is because when Britain was in rule, they only really invested in areas that was called the New City, versus building in an area they called the Old Town. But interesting enough, by the 1960s, Karachi was known as an economic model for most cities around the world. Cities like Seoul in North Korea modeled 5-year development plans around this city. But like most cities, officials get occupied in squabbling over small debates that it has made the city degrade over the years. And you know what, for our last fact, how about this? Did you know that Karachi is one of the most inexpensive cities to live in? Which I think is pretty surprising for the amount of population it has. But just because it's inexpensive doesn't mean you're living life terribly, as Karachi has an amazing art scene and multiple music festivals, and of course some of Pakistan's greatest museums and universities. And like I said earlier, due to the fact of their improved security force, a lot of businesses, restaurants, and cafes are overflowing throughout the city. So there you have it, guys. My name is Dave Walpole, and it's been awesome learning about new culture and a new place on the world. I didn't know a lot about Karachi, but it's fascinating to know. So thanks for joining me here on FTD Facts. Remember that we are a channel that love to get input from all of you. So if you have any suggestions तो इसको स्टॉप करते हैं। अभी देख लिया मैंने ये पूरा वीडियो और एक एक पॉइंट मैंने अच्छे से सुना है। सबसे पहले दोस्तों मैं ये चाहूंगा कि आप लोग जो दोस्त मेरे कराची से मुझे देख रहे हैं वो मुझे एक बार कमेंट में लिखिए, इतना लिखिए आई एम फ्रॉम कराची, ठीक है, तो मुझे मालूम चले कि कितने लोग मुझे वहां से वॉच कर रहे हैं। और काफी सारे इसमें कराची की जगह दिखा गई है, काफी सारे एरिया को कवर किया है, तो हो सकता है आप उन्हीं में से कहीं रहते भी हो, आपके आसपास का एरिया हो या फिर आप वहां गए हो। ये तो मैंने देख लिया कि कराची एक बहुत बड़ी सिटी है और पॉपुलेशन के वाइज देख ले तो जैसे इसमें बताया कि संगाई के बाद सेकंड नंबर कराची का जो सबसे ज्यादा क्राउडेड है। पाकिस्तान की सबसे ज्यादा जनसंख्या कराची में रहती है और वहां पे बहुत पुराने मोन्यूमेंट्स है ना, जो कि पूरे वर्ल्ड में माने जाते हैं। इकोनॉमिक बूस्ट है और काफी बहुत मेरे को जानने के लिए देखने के लिए मिला पास से, जिसमें कि ये बताया गया कि हाँ जो जितने सबसे बड़े पाकिस्तान के जो भी यूनिवर्सिटी है, म्यूजियम है, वो सारे के सारे कराची में है। हो सकता है और भी जगह हो लेकिन ज्यादातर यहीं पे है। 3 एयरपोर्ट है जिसमें से एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाए, यहाँ का फूड वगैरह दिखाएं, आपकी जो वैरायटीज हो, अगर पाकिस्तान के फूड खाने तो यहाँ मिल जाएंगे आपको, है ना।
क्योंकि हमारे बॉम्बे में भी ऐसा है, क्योंकि क्या होता है कि जो इस तरह की बहुत बड़ी सिटी होती है इसमें सिर्फ एक जगह के लोग नहीं होते, यहाँ के हर जगह के लोग यहाँ पे आके बसते हैं। जैसे कि मैं बॉम्बे गया था तो वहां पे आपको हर जगह के लोग मिल जाएंगे, पंजाब के, गुजरात के, है ना, महाराष्ट्र के भी मिलेंगे, बिहार, यूपी, जम्मू, हर जगह के लोग आपको वहां मिलेंगे। तो क्या होता है सब लोग वहां पे आते हैं, जैसे कि ये कराची है, यहाँ पे भी पूरे पाकिस्तान से लोग आते होंगे बिजनेस करने के लिए। सब अपने अपने जगह का स्पेशल फूड वगैरह जो होता है वो यहाँ पे लेके आते हैं और यहाँ पे बना के लोगों को सर्व करते हैं और अपना बिजनेस आगे बढ़ाते हैं। तो इसीलिए जो इस तरह की सिटीज होती है यहाँ पे एक तरह से आपको सब कुछ मिल जाएगा खाने के लिए यहाँ पे, है ना। पहले एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, मैं काफी कुछ देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में शायद मेरे को किसी ने बताया भी था नेशनल ड्रेस कुर्ता है यहाँ पे, है ना। इसलिए मैं देख रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ लोगों ने यहाँ पे कुर्ता पहना हुआ है। और ये जो एयरपोर्ट है यहाँ पे भी कई बार मतलब ऐसा हो रखा है कि आतंकवादी वगैरह आ चुके हैं, है ना। तो इसकी वजह से जो सिक्योरिटी बढ़ाई है वो काफी तगड़ी कर दी है कि उसके बाद से अभी तक कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। और ये समुद्र के साइड में बसा हुआ है पूरा का पूरा सिटी, है ना। तो वो एक अलग ही व्यू भी आता होगा कि मतलब जैसे हमारा सेम टू सेम बॉम्बे जैसे ही है, क्योंकि बॉम्बे में हमारा ऐसे ही है, समुद्र के साइड में बसा हुआ है। तो जब समुद्र के यहाँ से देखते हैं तो पूरा सिटी दिखाई देती है। लेकिन हाँ ये है कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह नहीं है बॉम्बे में। तो मतलब काफी बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, हाँ उतनी नहीं है, लेकिन अभी जैसे जैसे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से बिल्डिंगें बनेंगी, क्योंकि पॉपुलेशन वाइज ही बिल्डिंग बनती है। अब जब लोग बढ़ते रहेंगे तो लोग कहाँ रहेंगे, उनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है यहाँ पे, तो फिर वो एक के ऊपर एक फ्लोर खड़ा होता जाएगा, है ना। तो बहुत मतलब बिल्डिंगें हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन अब ये क्राउडेड हो रहा है तो इसकी वजह से जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनने जरूरी है। तो काफी मतलब पॉपुलर सिटी है और काफी लोग यहाँ पे कमाने आते हैं पूरे पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से क्या बहुत सारे कंट्री से भी आते होंगे। तो ये था वीडियो, इसको देख के मुझे काफी कुछ जानने को सीखने को मिला। और अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो प्लीज आप लोग उसको मतलब इतना एंगरली मत लीजिए, और हो सके तो मुझे गाइड करिए। और अगर कुछ मुझसे गलती रह गई हो, कुछ हो गया हो, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। अगर दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो जरूर एक लाइक करिए, शेयर करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस मिलती रहे। उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना होगा। तो इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्थी।